students. Hope you are learning well and enjoying your studies. Yesterday, I was talking about the story of Tenali Ram and the horse traders, and in which I told you I gave you the introduction of Tenali Ram. He was one of the most popular courtier of the King Krishnadev Rai's court, and he was a very witty person. And then it's a place. So I told you that the narrator told about that it was the king's court, and the horse trader came, and that horse trader showed the king about the Arabian horse, finest quality of horses. And he was saying that he has many of those kind of horses, and he will supply those horses to the king. And up to here, and the king was also very happy to look at the horse. So what happens to the next? Let us find out. Let's find out what happens to the next. Then after that, looking at the king, the horse trader said that this is the finest horse, and if you need it, then I have many such kind of horses. So and they will be very good for your stables. Then what the king says? The king says impulsively means very excitedly. The king says, I will buy them all. The horse trader said that this is the finest horse, and such more horses are there with me. So I can give that to you. So king was very happy to see that. Then he said, I will buy them all. मैं वो सारे के सारे जो है वो परचेज कर लूँगा, खरीद लूँगा. The horse trader. The horse trader said what? At your service, your majesty, I only need an advance of 5,000 gold coins, and I will bring the whole group of horses in 2 days. Now the horse trader says what? Sir, your majesty, Maharaj, in your service, आपकी सेवा में, I only need an advance of 5,000 gold coins. I need advance of 5,000 gold coins. Means give me 5,000 gold coins in advance. Then I will bring the whole group of horses for you, and within 2 days, I will bring the whole group of horses that I have. Then narrator says what? Now here comes the narrator who tells the story in the background. What he says? The king paid him 5,000 gold coins. King gave him 5,000 gold coins as an advance. Advance, something that is given before taking that thing. If you want to buy something, you give some amount of advance, and then that is thing is yours, and after paying the full amount you will get that. So he asked for this much of advance is this much, 5,000 gold coins. One gold coin means a lot. Not in today, but in the earlier time also, gold was the most precious metal. So one coin, two coin, three coin, not 100 coin, not 200 coin, not 1,000 coin. It was 5,000 gold coins he asked, and the king paid. Can you imagine? As it was told in the earlier story, king never thought again for the money if he has good horses. But this much of money, this is the money for the welfare of the public. He should make some roads and ponds, and for irrigation facilities and wells. In those times it were the wells. So these were the duties of the kings, to give services to the public, so that the public could be happy, because the public paid the taxes, and for that the king becomes so rich. So it is the responsibility of the king to take care of the public. But
What is happening? He is spending 5,000 gold coins he gave without thinking, and he gave as an advance. And the horse trader said that he will mm, return in 2 days, and he was from a foreign country. So, and he gave 5,000 gold coin to the trader, and trader promised to return in 2 days. Trader promised that he will return in 2 days. Before leaving, uh, uh, 2 weeks have passed. Now, what happened? He said that I will come in 2 days. Now, 2 weeks passed. There has been no news of the horse trader. Horse trader promised to the king that I will return in 2 days, but there was no news. 2 weeks have passed. He was saying 2 days. Now 2 weeks have passed. No, there was no news. Where is the trader? Nobody knows. Now, what happened? There has been no news of the horse trader. कोई उसका आता ही पता नहीं. Where he is? Nobody knows. He hasn't come, neither has he bought any of the Arabian horses. ही ना तो वो आया और ना ही कोई घोड़े लाया. Arabian horses. King liked so much Arabian horses. Neither he came nor bring horses. The king is getting increasingly impatient as well as worried. Now the king was impatient and worried. अब वो बहुत ही बेचैन हो रहा था और उसको चिंता भी हो रही थी. To distract himself, he decided to take a walk in his garden. When you are worried, then you decide to roam around, walk around. So he also decided to walk in the garden. Now there is a scene 3 in the garden. What is happening? Krishna Deva Rai muttering to himself. Muttering means speaking very slowly. Now Krishna Deva Rai is muttering to himself. वो अपने आप से बोल रहा है. What he is speaking? Where is the trader? ये व्यापारी, ये बिजनेसमैन, ये ट्रेडर, ये गया कहाँ? ये कहाँ है? आई वॉन्ट दिस अरेबियन हॉर्सेज इन माई स्टेबल. मैं अपने स्टेबल्स में, जो घोड़े के जो घर होते हैं, अस्तबल बोलते हैं जिसको, मैं अपने स्टेबल्स में, अस्तबलों में मैं चाहता हूँ कि वो अरेबियन हॉर्सेज आ जाएं. आई वॉन्ट दोज अरेबियन हॉर्सेज इन माई स्टेबल्स. मैं चाहता हूँ कि वो अरेबियन हॉर्सेज मेरे स्टेबल में आ जाएं. वाई इजंट ही ब्रिंगिंग देम? ही प्रॉमिस्ड दैट ही विल कम इन 2 days. उसने तो प्रॉमिस किया था कि 2 दिन में आ जाएगा. वो अभी तक ला क्यों नहीं रहा है? वाई इजंट ही ब्रिंगिंग देम? ला क्यों नहीं रहा है? पता नहीं क्या प्रॉब्लम है उसको. सडनली ही सीज तेनाली रामा सिटिंग इन द कॉर्नर ऑफ द गार्डन. सडनली ही वॉच, क्या देखता है वो? तेनाली राम वॉज सिटिंग इन द कॉर्नर ऑफ द गार्डन. तेनाली राम वो जो था वो गार्डन के कॉर्नर में बैठा हुआ था. एंड राइटिंग ऑन अ पीस ऑफ पेपर. एंड व्हाट तेनाली राम वॉज डूइंग? तेनाली राम वॉज writing on the piece of the paper. So in scene 3, there is a entry of Tenali Ram. Now Tenali Ram came in the scene. Now what happens? Now start the scene 4. Krishna Dev Rai. Here the dialogue of Krishna Dev Rai. Krishna Dev Rai delivers what? What are you writing, Tenali Rama? तेनाली राम तुम क्या राइट कर रहे हो? व्हाट आर यू राइटिंग तेनाली रामा? तेनाली रामा कैरीड द राइटिंग furiously without looking at the emperor. So Tenali Ram kept on. He carried on. He did not stop. He kept on writing fastly without looking at the emperor. Emperor, who ordered to anyone to cut the head. But Tenali Ram did not fear, and he kept on writing.
King is asking, what are you writing, Tenali Ram? He is not listening. He keep on writing. He keep on writing. सुन नहीं रहा है वो. He is keep on writing without looking at the king. वो king की तरफ देख भी नहीं रहा है. Now look at this. Wise men never fear to anyone. Now you can see here in the picture, Tenali Ram is sitting and his emperor is walking. He is standing. Now you can see. Now Krishnadev Rai demandingly. Now he is commanding. Now he is commanding. Rama, look up. Ram, ऊपर देखो. I command you. Show me that you what you are writing at once. जो कुछ भी तुम लिख रहे हो वो तुरंत मुझे दिखाओ. Advance, तुरंत, immediately. Show me whatever you are writing immediately, without any delay. Now he gave the command. No, king give the command. Whatever you are writing, show me that. Now, because he was, what an important thing that you are writing, you are not looking at the king. This was what king was thinking. Now, what Tenali Ram dialogue? Tenali Ram, what Tenali Ram says? Tenali Ram, Your Majesty, Maharaj, I am making a list of biggest fool of Vijayanagar kingdom. मैं तो एक लिस्ट बना रहा हूँ जो हमारे जो विजयनगर किंगडम है उसमें जो सबसे बिगेस्ट फूल्स हैं, मैं उनकी एक लिस्ट बना रहा हूँ. कृष्णदेव राय curiously means very eagerly, means when you are curious, when you want to know about something. So he curiously asked, eagerly what he asked, let me take a look. जरा मुझे भी देखने दो. Let me take a look. मुझे भी देखने दो. Tenali Ram reluctantly means when you are not willing to do something. Means if somebody is asking you and you are not willing to, suppose that somebody asks you your pen and you don't want to give it, so you reluctant to not to give that. So reluctantly means without will. तो तेनालीराम विदाउट विल, है ना, अनिच्छा से कहता है, नो योर मैजेस्टी यू मे नॉट लाइक इट. नो योर मैजेस्टी यू डोंट लुक एट दिस लिस्ट. यू मे नॉट लाइक दिस लिस्ट. कृष्णदेव राय स्टर्नली, बहुत फर्मली बोलते हैं. स्टर्नली मीन्स वेरी फर्मली, बहुत दृढ़ता से, है ना, सख्त सख्त होके बोलते हैं, आई एम द एम्परर. मैं सम्राट हूँ, मैं राजा हूँ. आई एम द किंग, आई कैन डू एनीथिंग. So the Krishnadev Raya also says in the same tone, I am the Emperor Tenali Ram. I want to see the names of the people in there. मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसे कौन से लोग हैं जो कि बिगेस्ट फूल है, जो सबसे बड़े मूर्ख हैं. फूल मीन्स स्टूपिड, silly man, मूर्ख. I am sure that what you have written must be quite true. And quite true means absolutely true, because he had faith in the Tenali Ram's knowledge. So he thought that whatever you have written, that must be true. Tenali Ram hands him the paper. Tenali Ram gave the paper. The king looks at the paper and is furious. Furious means very angry. Furious means very angry. Now as soon as the king looks at the paper, he is very very angry. Why he was angry? Let's find out. Krishnadev Rai angrily, he is king is now angry. What king is saying? Raman, how dare you? रामन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाउ डेयर यू, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? हाउ कैन यू, हाउ कैन यू, हाउ डेयर यू, हाउ कैन यू राइट माई नेम इन द टॉप ऑफ द लिस्ट? नाउ ही इज द किंग एंड हिज नेम इज written in the foolish people list in the top. Now king is very angry. He said, how dare you? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? हाउ कैन यू राइट माई नेम ऑन द टॉप ऑफ दिस लिस्ट? तुम मेरा नाम इस लिस्ट में सबसे ऊपर कैसे रख सकते हो?
आई एम द एम्परर, मैं राजा हूँ, मैं सम्राट हूँ, मैं महाराज हूँ। दिस इज द हाइट ऑफ इम्पर्टिनेंस। इम्पर्टिनेंस मीन्स बैड बिहेवियर। इम्पर्टिनेंस मीन्स बैड बिहेवियर, बदतमीजी जिसको कहते हैं, है ना। दिस इज द हाइट ऑफ इम्पर्टिनेंस। हाइट मीन्स हद है भाई, हद है, कहते हैं ना। सो दिस इज द हाइट ऑफ इम्पर्टिनेंस। तो ये तो बदतमीजी की हद है। तुमने तुमने किंग का नाम लिख दिया। यू रोट माई नेम ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट। आई वॉन्ट एन एक्सप्लेनेशन। मुझे एक्सप्लेनेशन चाहिए। नाउ गिव मी द एक्सप्लेनेशन। आई वॉन्ट एन एक्सप्लेनेशन। यू थिंक आई एम ए फूल इंडीड। क्या तुम समझते हो कि मैं वाकई में एक फूल हूं? तेनालीराम कामली। तेनालीराम को कुछ डर नहीं लगता, वो आराम से बोलता है। व्हाट ही सेज, योर मैजेस्टी, महाराज, यू गेव अ कंप्लीट स्ट्रेंजर 5,000 गोल्ड कॉइन्स। आपने एक स्ट्रेंजर को, एक अजनबी आदमी को, एक अननोन पर्सन को 5,000 गोल्ड कॉइन्स दे दिए, थिंकिंग दैट ही विल रिटर्न। आप ये सोचते थे कि वो लौट आएगा। एनी मैन हु डज Any man who does so expect the stranger to return is surely a fool. अगर कोई किसी स्ट्रेंजर को कुछ पैसे दे दे, कोई अननोन पर्सन हो जिसको आप जानते भी ना हो और वो यहाँ रहता भी ना हो, बाहर से आया हो, आप उसको कुछ पैसे दे दो और वो चला जाए और आप सोचो कि वो वापस आएगा, तो ऐसा जो सोचेगा ही श्योरली अ फूल। तो श्योरली ऐसा सोचने वाला जो भी होगा वो फूल होगा। तो आपने कहा था एक्सप्लेन करो कैसे मैं फूल हूँ, तो आपने एक स्ट्रेंजर को 5,000 गोल्ड कॉइन्स दे दिए विदाउट थिंकिंग दैट ही विल रिटर्न। और आप सोचते हैं कि वो वापस आएगा, तो आप फूल नहीं तो और क्या है। कृष्ण देवराय, ओ दिस इज वॉट इज बॉदरिंग यू। अच्छा अच्छा, तो तुमको ये चीज परेशान कर रही है। दिस इज वॉट बॉदरिंग यू, दिस इज मेकिंग यू वरीड कि मैंने उसको 5,000 कॉइन्स दे दिए। यू रियली द ट्रेडर वॉन्ट रिटर्न। यू रियली थिंक दैट द ट्रेडर वॉन्ट रिटर्न। क्या तुम्हें वाकई ऐसा लगता है कि ट्रेडर लौट के नहीं आएगा? वॉट इफ ही डज रिटर्न। अगर वो वापस आ गया फिर व्हाट यू विल डू। तब फिर तुम क्या करोगे? भाई तुम ये कह रहे हो कि मैं सबसे बड़ा फूल हूँ, मैंने एक स्ट्रेंजर को, एक स्ट्रेंज ट्रेडर को जो कि अरबियन कंट्री से आया था, मैंने उसको 5,000 गोल्ड कॉइन्स दे दिए, है ना। एंड तुम कह रहे हो कि अब वो वापस नहीं आएगा, ऐसा वो वापस आएगा मैं ऐसा सोच रहा हूँ, इसलिए मैं एक फूल हूँ। तो अगर अगर कहीं वो वापस आ गया फिर क्या करोगे? बोलो बोलो बोलो, टेल टेल, व्हाट यू विल डू इफ ही विल रिटर्न। देन तेनालीराम सेज व्हाट, तेनालीराम cheekily, Tenali Ram happily said, what cheekily means happily. Tenali Ram says, if he returns, I will put his name at the top of the list instead of yours. He says that if he returns, अगर वो वापस आ जाएगा, then I will put his name at your place. तो आपका नाम जो मैंने सबके ऊपर लिख रखा है ना, at the top of the list, उस टॉप पे, उस आपके जगह पे मैं उसका नाम लिख दूंगा। क्योंकि उससे बड़ा मूर्ख कौन होगा जो इतना पैसा लेके चला गया और फिर वो वापस भी आएगा। तो दिस इज व्हाट तेनालीराम सेड। नाउ कृष्णदेव राय अपोलोजेटिकली, अभी उनको ये रियलाइज हो गया कि उन्होंने मिस्टेक कर दी है। एक स्ट्रेंजर को इतना सारा पैसा दे दिया है, 5,000 गोल्ड कॉइन दे दिए हैं, और 2 डेज का कहा था, 2 वीक्स हो गए और मैं अब भी सोच रहा हूँ वो आएगा, अब तो वो आने से रहा। तो इसीलिए तेनालीराम ने ऐसी स्ट्रेटजी प्लान करी और मुझको ये सब दिखाया। नाउ द कृष्णदेव राय से आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग। नाउ द कृष्णदेव राय इज सेइंग कि आई अंडरस्टैंड, मुझे पता चल गया है कि जो तुम कह रहे हो तेनालीराम। इन फ्यूचर आई विल ऑलवेज टेक मेजर डिसीजंस सेंसिबली। अब जब भी मैं कोई मेजर मतलब बहुत बड़ा मेजर डिसीजन लूँगा, बड़ा कोई डिसीजन लूँगा, तो बहुत ही सेंसिबली, बहुत ही दिमाग से
सोच समझ के लूँगा। सेंसिबली मीन्स सेंस लगा के, सेंस तो दिमाग में होता है ना, तो दिमाग लगा के लूँगा कि कोई भी डिसीजन लेना है। एंड आई विल ऑल्सो कंसल्ट यू ऑन द इम्पोर्टेंट मैटर्स ऑफ द किंगडम। और किंगडम के जो राज्य के, राज्य के जो भी मैटर्स होंगे इम्पोर्टेंट, उनमें मैं तुमसे कंसल्ट किया करूँगा। ठीक है ना। तो दिस इज व्हाट this is in this way that Tenali Ram make the king realized that what kind of mistake he has done, uh, because of the lack of the without taking the things seriously, and he did a lot of mistake. The 5,000 gold coins was taken away by the trader, and those could be the benefit of the public. Okay, so in this way, Tenali Ram made the King Krishnadev Rai realize that what kind of mistake he was doing. I hope you might have liked this story, and so read it again, and you will enjoy it. Okay, and that's all for today. Thank you.